You know, this is what I like about powerful mass market cars which are not very big in size. You can have fun anytime, anywhere, even within the speed limit. पार्थ ने मुझे ये गाड़ी दी और बोला चलाओ। कहाँ चलाओ? हाईवे पे। इसका जो एक्सपीरियंस है, अंदर से मुझे जो फील हुआ बहुत बेहतरीन था और अपने आप में ये एक्सपीरियंस है। In fact, I don't feel like returning the car back to Volkswagen. The Volkswagen Taigun has been a part of the MotorBeam long-term fleet for the past few months. अब ये जो हमारे पास गाड़ी है, this is the top of the line Taigun, यानी कि इसमें 1.5 लीटर TSI EVO इंजन आता है DSG गियर बॉक्स के साथ, और ये गाड़ी को मैं डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहा हूँ. So how good or how bad is the car to live with? I'll answer 10 important questions. Question number 1: what are the issues that I have faced with this car? Now see, the Taigun is a very good car, but कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती. कुछ ना कुछ तो इश्यूज सभी गाड़ी में होते हैं. And if you talk about the issues on the Taigun, सबसे पहले आते हैं टच स्क्रीन पे. नाउ VW ने जो ये टच स्क्रीन दी है उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है और स्क्रीन इटसेल्फ काफी यूजेबल है, बहुत स्मूथ फील होती है. लेकिन इसमें कभी कभी इशू ये आता है कि व्हेन यू कनेक्ट योर फोन द कनेक्शन गेट्स लॉस्ट. सो इट हैज वायरलेस एप्पल कारप्ले व्हिच आई यूज अ लॉट, बट कभी कभी क्या होता है दैट द फोन डज नॉट कनेक्ट टू वायरलेस कारप्ले एंड फॉर सम रीजन इट जस्ट कीप्स कनेक्टिंग, बट वो कुछ कनेक्शन होता ही नहीं है. समटाइम्स व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सडनली द एप्पल कारप्ले कनेक्शन गेट्स लॉस्ट एंड द फोन गेट्स कनेक्टेड टू द ब्लूटूथ सिस्टम ऑफ द कार. तो ये इशू काफी बार मैंने फेस किया है. सेकेंडली दिस हैपेंस वेरी रेयरली, इट हैज हैपेंड आई थिंक 3 or 4 टाइम्स इन द पास्ट कि व्हेन आई वाज पार्किंग द कार आई वाज ऑब्वियसली इन रिवर्स गियर. रिवर्स से डाल के मैंने न्यूट्रल में डाली या ड्राइव मोड में डाली, द स्क्रीन वेंट completely blank. I could not see anything. The screen was like totally unresponsive. Then I had to restart the car and then it started working. तो स्क्रीन में ये थोड़ी inconsistency फील होती है सॉफ्टवेयर में. So this is something that could be improved upon in the next update. The second small issue I face with the car is with the auto up feature of the driver side power window. Now this has this auto down feature which works well, but the auto up feature is actually very inconsistent. कभी कभी क्या होता है, you press this thing and the window right now it is going up, but बहुत बार ऐसा होता है कि विंडो ऊपर पूरी नहीं जाती, हाफ जाती है फिर रुक जाती है, या हाफ जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, या sometimes it just does not work and you have to keep your finger on the switch itself. Now let's come to issue number 3, which is again a minor irritant. So when you're driving this car without any music and अगर आप बुरे रोड पे चला रहे हैं, थोड़े भी inconsistent रोड पे चला रहे हैं, then from the doors you will hear a squeaking noise and this comes from all 4 doors. So it is like a khach noise which is audible from these panels on the door pads. So again, this is not a very major issue. You can solve it by spraying some WD-40, but again after a few months the issue resurfaces. So this is something that I wanted to talk about. Question number 2: how is the AC performance on the Taigun? Now the performance is actually quite satisfactory, but इसमें the thing is that if the car is parked in the sun for really long hours, then it takes a fair amount of time to cool the cabin. Now if you compare this to any other car, for example I had this and another Japanese media car which was parked next to the Taigun, and दोनों cars को हम लोग ने साथ में start किया and the Japanese car actually chilled the cabin much quicker than the Taigun. In the Taigun what happens is that you need to keep the temperature at 17, 18 or probably something like 20 if you want to have a cool temperature inside the cabin. On Japanese cars and even Korean cars for that matter, even at 24, 25 the cabin feels quite cool. So this is something that I wanted to discuss. AC cooling is very nice, that is not an issue at all, but only thing is that it takes time to chill the cabin and you need to keep the temperatures lower than what you usually keep in other cars. मैं तो आपको मेरा long term review बताते रहूँगा, लेकिन what do my colleagues from MotorBeam think about the Taigun, आइए जानते हैं. Hey guys, Daniel here. Being an enthusiast, मेरे को ये गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा मज़ा दिया. 150 PS, 250 Nm, it just shoots. 7 speed DSG बहुत ज़्यादा क्विक है. लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैं गुजराती है एंड मेरे को माइलेज चाहिए, वो ये कार से इतना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिल पाया. सो दैट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. एंड द सेकंड थिंग दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक इज़ दैट द सीटिंग स्ट्रक्चर फॉर द ड्राइवर एज वेल एज द को पैसेंजर इज़ अ लिटिल टू लो. सो फॉर माई हाइट, आई एम लिटिल शॉर्ट इन हाइट, मेरे को कुछ ज़्यादा ही लो लग रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्फर्ट इज़ नाइस एंड इट इज़ अ वेरी क्विक कार. मैंने टाइगन एज अ ट्रैकिंग कार चलाई थी एक शूट पे, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगी ये गाड़ी. ऊपर से इसका जो सिटिंग पोजीशन है एज अ ड्राइवर बहुत कंफर्टेबल और स्पोर्टी है, और इसका इंजन एकदम स्मूथ और साइलेंट है, और इसका इंटीरियर थोड़ा सा ठीक है, मतलब इतना एकदम भी प्रीमियम नहीं है, बट है प्रीमियम लगता है अंदर से, बट इतना नहीं है. और सीट्स इसकी कंफर्टेबल है, मेरे हाइट के हिसाब से इसकी सीट भी अच्छी है. पता है भाई लोग, पार्थ ने मुझे ये गाड़ी दी और बोला चलाओ. कहाँ चलाओ? हाईवे पे. सीरियसली मज़ा आ गया, मक्खन के जैसे चलती है हाईवे पे, और इसका जो एक्सपीरियंस है अंदर से मुझे जो फील हुआ बहुत बेहतरीन था. मतलब 20-22 लाख के सेगमेंट में बाकी जो गाड़ियां हैं, जो इसके साथ की गाड़ियां हैं, उसमें सबसे बेहतरीन है ये, और अपने आप में ये एक्सपीरियंस है.
So the next question is, how is the mileage, how is the fuel efficiency of the Taigun GT? So this is a very important question because mileage matters to all of us, so that is okay. Now if I talk about the mileage of this car, now being a 4-cylinder turbocharged powerful petrol engine, the mileage is very sensitive to the way you drive this car. अगर आप गाड़ी को बहुत फास्ट चलाओगे, aggressively चलाओगे और ठीक से मतलब नहीं चलाओगे, then realistically you will get around 8 to 9 kilometers per liter in the city and highway पे वो नंबर 12-13 तक जाएगा, which is still fine. Now if you drive this car sensibly, अगर आप हाईवे पे लेके गए हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, आप आराम से 80-100 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, for long distances this engine will pleasantly surprise you. As much as 17-18 kilometers per liter is possible with the 1.5 TSI Evo because this one has cylinder deactivation technology. तो उसमें क्या होता है कि जब आप गाड़ी में मतलब गाड़ी को आराम से चला रहे हो, क्रूज कर रहे हो, तो दो सिलेंडर बेसिकली 4 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो सिर्फ 2 सिलेंडर पे इंजन चलता है जिससे योर फ्यूल कंजम्पशन गोज डाउन. सो if you drive this car sensibly, if you're just easy on the throttle, you cruise along, you will get amazing mileage. You drive this car aggressively, the number will drop, the car will gulp down a lot of fuel, and if you drive in mixed conditions, then you can expect 10 to 11 kilometers per liter in the city, and out on the highway around 13-14 is possible. So realistically your running cost will be around 9 to 10 rupees per kilometer. So I have driven this car for around 3,000 kilometers. I got this car at 5,500 kilometers on the auto. Right now it is showing 8,694 kilometers, and roughly in around 3,100 kilometers of driving, I have spent close to 27,000 rupees on petrol. The next question is, how is the performance? Now performance is top class with the Taigun GT. The engine is so powerful, 150 horsepower, 250 Newton meters of torque. You get a 6-speed manual also. I have the 7-speed DSG thankfully because Bombay में इतना ट्रैफिक है कि मैनुअल चलाने का तो सेंस है ही नहीं. Drive an automatic and take care of your comfort and convenience. Now performance is mind blowing from this engine to say the least. ये engine इतना responsive है, गाड़ी मतलब आराम से ऐसे रफ्तार पकड़ लेती है, and it is very quick. This is what I like about powerful mass market cars which are not very big in size. You can have fun anytime, anywhere, even within the speed limit. These cars are basically like small pocket rockets. So the Taigun has an amazing engine, no doubt. बहुत मजा आता है इसको चलाने में, and even though I'm driving this car on a daily basis, somehow I'm just not bored of it. In fact, I don't feel like returning the car back to Volkswagen, and every drive is entertaining in this car. मैं कभी कभी आराम से भी चलाता हूँ, I mean बहुत बार आराम से भी चलाता हूँ, but the overall वाइब दैट दिस कार हैज, जो एकदम प्लेजेंटनेस फील होती है गाड़ी में बैठने से चलाने से, वो मतलब अलग ही मजा आता है. सो आई एक्चुअली एंजॉय एवरी ड्राइव इन दिस कार, एंड व्हेन आई कम टू ऑफिस अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम होम, द रोड्स आर रियली एम्प्टी, सो आई गेट अ चांस टू एक्सपेरिमेंट विद माई ड्राइविंग स्टाइल्स. कभी कभी मैं देखता हूँ कि माइलेज कितनी कम मिलती है इफ आई ड्राइव द कार अ बिट एग्रेसिवली. समटाइम्स आई जस्ट क्रूज अलॉन्ग विद 70-80 एंड चर्न आउट द बेस्ट माइलेज फ्रॉम दिस इंजन. तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलती है. DSG गियरबॉक्स, दिस इज अ क्विक गियरबॉक्स. DQ200 है जो पहले आता था सुपर्ब में, पुरानी सुपर्ब में आता था, पोलो वेंटो सभी गाड़ियों में हम लोग ने देखा है. इट इज़ अ गुड गियरबॉक्स, नो डाउट. इट इज़ वेरी क्विक, और जो मतलब उसकी कैलिब्रेशन है इंजन के साथ, दैट हैज़ बीन डन वेरी नाइसली. नाउ दिस गियरबॉक्स यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज अर्लियर, सो बिकॉज दिस इज अ ड्राई क्लच गियरबॉक्स, तो काफ़ी जल्दी हीट अप हो जाता है. एंड नाउ दोज इश्यूज आर मोर और लेस रिजॉल्व्ड बाय VW ग्रुप, बट कभी भी कुछ हो सकता है. सो my suggestion is, of course, don't ignore the car only for the gearbox. If you're buying the Taigun, or any other car with the same gearbox, just get the highest possible extended warranty coverage. So you'll be sorted for that duration of 6, 7, 8 years, whatever is the highest coverage that is offered by the automaker. गियरबॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है डे टू डे सिचुएशंस में, लेकिन व्हेन यू ड्राइव द कार इन हैवी ट्रैफिक एट स्पीड्स बिटवीन 20 to 40 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज वेयर द गियरबॉक्स टेंड्स टू गेट कंफ्यूज. कभी कभी वो कंफ्यूज रहता है कि सेकंड गियर में हूँ तो शुड आई अपशिफ्ट टू थर्ड, और शुड आई अपशिफ्ट टू फोर्थ, और शुड आई डाउन शिफ्ट टू सेकंड फ्रॉम फोर्थ, और डाउन शिफ्ट टू थर्ड फ्रॉम फोर्थ. तो ये सब चीज़ों में यू कैन फील सम लैगीनेस इन द कार. कभी कभी गाड़ी से झटके लेती है, एंड दिस थिंग अगेन हैपन्स इन एवरी कार विद द सेम गियरबॉक्स. तो वो तो है
है issue, तो it gets, you have to spend some time getting used to that thing. You cannot change that, of course. Apart from that, no complaints at all when it comes to the performance of this car. It can leave a lot of expensive cars behind on the highway. This is something I can say with experience. Next question, is the Taigun a family car? Family car means, of course, it has to be spacious and comfortable and of course practical. Now the car has more than enough bottle holders and storage areas in the cabin. It scores really high on that front. Space is also quite decent because this is not a sub 4 meter compact SUV. So rear seat space काफी अच्छे है. In fact, in the last few months that I've had the car, मैं पहली बार आज पीछे की सीट पे बैठा हूँ and I'm actually liking it here. Headrest का जो एंगल है वो काफ़ी अच्छा है. Backrest is just about perfect. Middle passenger को भी यहाँ पे headrest मिलता है. काफ़ी सारी महंगी गाड़ियों में भी आपको नहीं मिलता बीच में headrest. And the ride quality of over bad roads is nice. खाली वो है कि कभी कभी थर्डिंग नॉइज आती है सस्पेंशन से if the pothole is too sharp. अभी यहाँ पे थोड़ी बॉडी मूवमेंट हो रही है, आपको दिख रहा होगा. And the Taigun top end variant has 17-inch tires, तो आपको थोड़ा वहाँ पे you have to be careful because the tires are not prone to puncture as such, but you just have to be careful over bad roads because in this car in the last 3 months the rear right tire got punctured at least 3 times I think. एक बार तो मेरे बिल्डिंग में, 2 बार मेरे बिल्डिंग में हुआ था and once it happened on the road. So in the first instance there were 2 punctures at the same time. So I had this air inflator with me, tire inflator with me, so I could just get out of that and drive to the nearest tire repair shop. The ride quality is good. Of course there is some body movement, but it is not very something that would make you feel pukish or nauseatic. So it is not bad that way, and I'm hoping that you guys can hear the squeaking noise which is coming from the doors right now because the music is off, the AC is off, and the car is being driven on a bad patch of road and all the doors are making that khach noise. So yeah, as a family car, the Taigun is quite good. Space is there at the back. Boot is also nicely shaped, and the middle passenger has decent space. Not the best, but it is manageable. The next question, is it a driver's car? I would say definitely it is a driver's car, and most importantly, it is a practical driver's car. Ground clearance is good. The boot space is decent. Space inside the cabin is decent. You get all the features that you want, and the car is not very expensive also. I mean, it is within reach. So yeah, for people who want a car which is affordable, also a car which is very powerful, also 150 horsepower is not a joke. This car is a delight. Handling is very nice, and the body control is excellent with the Taigun. In fact, even the Kushaq, it is exactly the same. There is very less amount of body roll, and I just love how the car handles tight roads and twisties and all that. Even on the straight highways, you just keep driving straight fast, and the car doesn't disappoint you. On the ghats also, the experience is very engaging. So overall, it is a very enjoyable car to drive. The compact dimensions mean that you can chuck this car wherever you want, and you'll be smiling after a long drive in the Taigun, that is for sure. तो गाड़ी चलाने में तो definitely बहुत मजा आता है. And the best part is that for all these Volkswagen group cars, there's a lot of support available in the aftermarket. तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़े साल बाद आपको लगता है कि you want something more out of your car, you can spruce up the car cosmetically also, or maybe unlock some extra features using VCDS, या फिर आप इसके इंजन में परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं. आप इसको रीमैप करवा सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2. गियर बॉक्स के लिए भी अभी ट्यून्स अवेलेबल आफ्टर मार्केट में. यू कैन रीमैप द गियर बॉक्स ऑल्सो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू एंड इंक्रीज द डिजायरेबिलिटी ऑफ योर कार. तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है. व्हेन यू गेट द कार, ब्रांड न्यू चलाओ पहले थोड़े साल, गेट यूज्ड टू द कार, एंजॉय इट फॉर इट्स ओन पोटेंशियल. उसके बाद इफ यू वांट, यू कैन मॉडिफाई इट. लॉट्स ऑफ सपोर्ट इन द आफ्टर मार्केट, बोथ इन इंडिया ऑल्सो एज वेल एज ग्लोबली ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 8, विच वेरिएंट ऑफ द टाइगुन शुड यू बाय? अब टाइगुन में ऐसा है कि इतने सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं कि 12-13 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए की रेंज में आपको टाइगुन के अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंफर्ट लाइन, गोइंग अप टू हाई लाइन, देन टॉप लाइन, एंड देन फाइनली द GT वेरिएंट्स. नाउ इफ यू वांट only and only pure performance, I'd say get the GT, the 1.5 TSI Evo. This is worth it. But if you think कि आप पूरा टाइम भगाने नहीं वाले हो गाड़ी, you are okay with normal performance. The 1 liter TSI is also good engine. वो इतना ज़्यादा पंच नहीं है, लेकिन it is still a very good engine. If you want a value for money variant of the Taigun, I'd say go for the Highline variant. It costs somewhere between 16-17 lakh rupees, and you can get the automatic also with the Highline variant. It has all the basic features. Comfort line variant is the cheapest variant, but उसमें थोड़े कम features
फीचर्स आते हैं. Highline has the essential features. Top line is again slightly more expensive, but it is not as value for money as the Highline. तो अगर value for money चाहिए, Highline variant ले लो. Performance चाहिए तो फिर get the GT. Question number 9. How does the Taigun fare against its competition? अब but Taigun ऐसी गाड़ी है कि ये प्राइस रेंज में एक्चुअली आपको बहुत सारा कंपटीशन मिल जाता है. You have sedans like the Slavia, Virtus, Verna City. Keeping them aside, you have sub 4 meter compact SUVs like the Brezza, Venue, Sonnet, and you have a Thar also, which is a lifestyle SUV. और अगर आप ये सेगमेंट की बात करें, slightly above 4 meters, you get the Taigun, you get the Kushaq, which is a sibling of the Taigun, you get the MG Aster, you get the Hyundai Creta, and of course the Kia Seltos. So competition is there, a lot of cross shopping happens, and buyers will definitely be confused. So now if I have to sum up the Taigun and the Kushaq, well, both the cars are siblings. दोनों गाड़ियाँ काफ़ी similar फील में सेम इंजन आपको मिल जाते हैं. प्राइसिंग भी more or less सेम है दोनों गाड़ियों की. तो take a test drive of both and see which one you like more. अगर मैं Taigun को Creta के साथ कंपेयर करूँ, now Creta has a diesel engine also, it has a petrol engine also. इसमें अभी टर्बो पेट्रोल भी आने वाला है, which will be more powerful than the 1.5 TSI engine of the Taigun. And the Creta is actually pretty sorted car. उसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं. Hyundai की सर्विस नेटवर्क is also better than Volkswagen's network, and the pricing will be more or less the same. But of course, the Creta is not as engaging to drive as the Taigun. The Taigun is more of a driver's car, and in that department, it scores really well. तो अगर आपको ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, फ्यूचर में आपको मॉडिफाई भी करवानी है, तो गेट द टाइगुन. इफ यू वांट समथिंग विच इज नो नॉनसेंस, गेट द Hyundai Creta. अगर मैं सेल्टॉस के साथ कंपेयर करूँ, नाउ अगेन Creta एंड सेल्टॉस आर मोर और लेस द सेम कार्स. ऑफ कोर्स दे हैव अ डिफरेंट बॉडी, द इंटीरियर इज आल्सो कंप्लीटली डिफरेंट, बट द मैकेनिकल्स आर द सेम. नाउ आउट ऑफ द Creta एंड द सेल्टॉस, आई पर्सनली प्रेफर द Creta बिकॉज ऑफ Hyundai's consistent sales and service network. Kia में it is a bit inconsistent. This is what we have heard from owners. So if you compare the Taigun to the Seltos, again वही फंडा हो जाता है. Seltos may have more features, but again the Taigun feels more fun to drive. The Seltos feels very neutral to drive. So that's about it. Kushaq, Creta, Seltos, these are the biggest competitors of the Taigun. MG Aster भी है. MG Aster में the thing is that it consumes a lot of fuel. So realistically you get 7-8 kilometers per liter, which is quite less, and the long-term reliability of that car is unknown. However, for the price, it has the best interiors in the segment, and overall it looks decent also. It has nice comfort, but वही है कि long-term reliability थोड़ी unknown है और fuel consumption वो गाड़ी का बहुत ज़्यादा है. So this was a basic comparison of the Taigun with the rivals, but of course आपको कोई भी गाड़ी लेनी है, take long test drives of all of these cars back to back चलाओगे तो आपको फटफट समझ में आएगा कि what are the pros, what are the cons of each car, and which one you and your family like more. तो Volkswagen Taigun के long term review की तो बात हो गई. Now it is time for the MotorBeam report card. So what I'll do is I'll rate this car on different parameters, and that will help you decide whether you want to buy the Taigun or look somewhere else. So the first point is desirability. In terms of desirability, styling, looks, I think the Taigun does really well. So on the desirability front, I'll rate this car 4.5 out of 5. The next parameter is comfort and space. अब comfort और space काफ़ी decent है Taigun में. इसमें आपको 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं. 5th पैसेंजर को मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट स्पेस इसमें आपको मिल जाती है. तो ऑन स्पेस एंड कंफर्ट आई वुड रेट दिस कार 4 out of 5. The next parameter is performance, my favorite parameter on this scale. I would give the car 5 out of 5. The 1.5 TSI Evo is a fabulous engine. बहुत बढ़िया performance, एकदम गाड़ी चीर के निकलती है हाईवे पे. So driving the car is definitely a very enjoyable experience. Handling भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की. So yeah, full marks on this front. The next parameter is fuel economy. अब जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, throttle response is very sensitive on this car. Mileage भी मतलब बहुत sensitive है. If you drive the car sensibly, अच्छी mileage मिलेगी, लेकिन realistically अगर हम बात करें, you will get 10 to 12 kilometers per liter with the Taigun. So on that front, I would give this car 3.5 out of 5 because the running cost will be around 10 rupees per kilometer. The next parameter is service. अब आप सबको पता है कि Volkswagen की जो सर्विस थी वो इनिशियली काफ़ी inconsistent रही थी from 2010 to 2015, and a lot of people used to face issues not just with VW but also with Skoda. So that thing has improved now. कंपनी ने काफ़ी काम किया है, जो पार्ट्स की कॉस्ट होती है उसको लोअर किया है, जो सर्विस क्वालिटी होती है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया है, एंड द कंपनी हैज़ डेफिनेटली टेकन सम एफर्ट्स ओवर देयर. बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्विस सेंटर्स ऐसे होते हैं, दे may नॉट ऑफर द बेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस. तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो,
it is best to talk to other customers in your locality and find out a first-hand experience. But overall, on a scale of 0 to 5, I would rate the service experience as 3.5 right now. आते फाइनल पॉइंट पे, which is the value for money factor of the Taigun. ये गाड़ी खरीदना एक value for money decision होगा या नहीं? I think the pricing is at par with what rivals offer. For people who are on a tight budget, Volkswagen has the lower variants like the Comfort Line and the Highline manual, and for people who don't mind splurging, they have the GT variant also. तो I think variant का जो lineup है वो काफ़ी अच्छा है. प्राइस ब्रैकेट बहुत वाइड है, 13 लाख ऑन रोड से लेके 22 लाख रुपए ऑन रोड. तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैव सम और द अदर वेरिएंट टू चूज फ्रॉम. सो ऑन दैट फ्रंट, ऑन द VFM front, I would rate this car 4 out of 5. So thank you guys for watching this video. If you have a Taigun, let me know your experience in the comment section below. Also let me know which variant of the car did you buy and how many kilometers have you covered.